Hello everyone, welcome to our YouTube channel. As we close the year 2023, let's take a close look at how last 20 years have been and how you can make the most of year 2024 to create a fortune that can cope up with the global recession. As we dive into the financial history of Indian economy, the elections are definitely a key point that should be considered for this analysis. Well, जब 20 साल का रिसर्च किया गया तो इसमें 4 लोकसभा इलेक्शंस कंसिडर किए गए, जिनके ऑब्जर्वेशन सुन के आपको काफी अच्छा लगेगा। जब ये रिसर्च और एनालिसिस पूरा किया गया तो उसके बाद पता चला कि इलेक्शन अनाउंसमेंट होने के ठीक 6 महीने पहले मार्केट में रैली आती है और वो अराउंड 10 to 30% की रैली होती है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द मार्केट परफॉर्म्ड ऑन द डे ऑफ इलेक्शन रिजल्ट इन द पास्ट। साल 2004 लोगों ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बीजेपी की सरकार गिर के कांग्रेस की सरकार आएगी, जिस वजह से 17 मई 2004 को बीएसई सेंसेक्स 15% से गिर जाता है, मेकिंग इट द बिगेस्ट फॉल ऑफ दैट टाइम। और जिसका ठीक उल्टा होता है साल 2009 में 18 मई 2009, जब लगातार दूसरी बार कांग्रेस की सरकार बनती है और सेंसेक्स अराउंड 17% इंक्रीज होता है, जिस वजह से मार्केट में ट्रेडिंग स्टॉप हो जाती है। इसके बाद साल 2014 में जब बीजेपी फिर से पावर में आती है तो मार्केट नियरली 18% के हाई पे जाता है और दिन खत्म होते होते 9% पे आके रुक जाता है, मेकिंग इट अ स्मूथ ट्रेडिंग एनवायरनमेंट। साल 2019 में बीजेपी फिर से पावर में आती है और इंट्राडे में मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन दिन के एंड में अराउंड 1% लॉस में रुक जाता है। अब आते हैं साल 2024 के जनरल इलेक्शंस पे। रिसेंटली हुए राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ के इलेक्शन से ये पता चलता है कि बीजेपी का डोमिनेंस काफी अच्छा है और बीजेपी के गवर्निंग पॉलिसीज की वजह से लोगों में ट्रस्ट फैक्टर भी काफी बना हुआ है और बहुत सारे लोगों ने बीजेपी को 2024 का विनर भी घोषित कर दिया है। This really shows how India is confident about BJP winning the elections in 2024. अब थोड़ा अपने टॉपिक पे आते हैं और समझते हैं कि 2024 के इलेक्शन से आपके इन्वेस्टमेंट पे क्या इंपैक्ट हो सकता है और आपने किस में इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे आपको बेनिफिट हो। This is definitely a once in a generation opportunity to build your wealth exponentially as we head towards 2024 elections. Now let's take a look at the driving factors for market in 2024 elections and why BJP's win will decide India's economy for next 10 years. भारत आत्मनिर्भर विस्तार के दौर में प्रवेश कर रहा है। इससे आने वाले 10 साल में नॉमिनल जीडीपी रेट 10% पर एनम दिख सकता है। The economic and policy foundations built by Modi government creates the potential for the Indian economy to join the US and China in the 10 trillion GDP club by 2035 if nominal GDP growth rises by 10% per annum. Now let's try to understand why we feel so. There are various factors which will define India's success in next 10 years, such as growth, investments, economy and political stability, earning plus valuations and elections. और इस वीडियो के एंड में हम देखेंगे कि इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना प्रॉफिटेबल हो सकता है। नाउ लेट्स डीप डाइव इनटू ईच ऑफ दीस फैक्टर्स। ग्रोथ। Investments in manufacturing should act as a new growth driver, driven by the opportunity to leverage the Make in India program and the diversification of global supply chains. The Make in India program is becoming a reality, with the world's largest contract manufacturer announcing plans to double its Indian workforce to 50,000 employees and invest US $2.7 billion in Karnataka state. इसके बाद देखते हैं इन्वेस्टमेंट्स। ब्रॉड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फोकसिंग ऑन इंप्रूविंग कैपेसिटी, decarbonization and self-sustaining business model is becoming the norm. Mumbai plans to invest US $40 billion to decongest and decarbonize transport as well as improve water treatment and quality. Economic and political stability. The government is playing an important role in kickstarting the new industrialization process. Prime Minister Modi kicked this off with the 2014 Make in India program, which led to the launch of production-linked incentive to leverage the opportunities that diversification of global supply chain presented. Earnings plus valuations. Market performance represented by Nifty 50 index over the past 2 years has been positive, but it has lacked cumulative earnings growth of 31%. This has pushed valuation lower and created new investment opportunities. We believe 2024 could witness a re-rating of the market if there is an increased acceptance among foreign investors that India's growth is structural as opposed to cyclical. Elections. The BJP has been victorious in December state elections, creating a positive momentum heading into general elections. Even in states where BJP is in opposition, it has witnessed a rise in its vote share. For example, in Telangana, it doubled from 7% to 14% following the state elections. The probability of an opposition win has fallen further in our view. There are some concerns around key man risk if Prime Minister Narendra Modi has to step down. A surprise opposition India alliance win would likely to push the market lower in the short term, but would unlikely to alter the long-term trajectory for growth. Now let's take a look at our favorite topic, key investment schemes. Rising demand for financial services. Our focus is on private sector banks with solid deposit franchises and loan pricing power, which we expect to gain market share from state banks.
The under-penetrated insurance sector also has a long runway for growth in our view. Infrastructure and capital investment. The resurgence of manufacturing, public-led infrastructure investment, and global supply chain diversification are creating multiple investment opportunities. Green transition. Electric vehicle manufacturing, solar panel production, and decarbonization of high carbon emitting industries represent opportunities. I hope this was useful. Sumit Chaudhary signing off.